हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आज डिस्कस करनी है एंड व्हेन वी से द डाइजेस्टिव सिस्टम पर्टिकुलरली इस चैप्टर में जो कि चैप्टर नंबर 15 है फ्रॉम इंदर बी सिंह और इसमें हम डिस्कस करेंगे इसोफेगस की हिस्टोलॉजी, स्टमक की हिस्टोलॉजी एंड देन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में दोनों इंटेस्टाइन डिस्कस करनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसका दूसरा नाम है एलिमेंट्री कैनाल, it's a long muscular tube that begins at the oral cavity and ends at the anus, and this is something that you already know कि the digestive tract या gastrointestinal tract या alimentary canal, it begins at the oral cavity and it ends at another opening which is known as anus. Okay, so there are two openings on both the ends of this long tube. Different parts of the tract are specialized to perform different functions. Stomach, for example, grinding के लिए important है. Small intestine is important for absorption. Large intestine का अपना काम है. इसी तरह हर part जो उसका फंक्शन है उस हिसाब से उसकी हिस्टोलॉजी मॉडिफाइड है। ओके, इसोफेगस एंड एनल कैनाल आर मेयरली ट्रांसपोर्ट पैसेजेस। तो ये जो दो ट्यूब्स हैं, इसोफेगस एंड अ स्मॉल एनल कैनाल, दे एक्चुअली डू नॉट पार्टिसिपेट इन डाइजेशन बट दे जस्ट ट्रांसफर द फूड। सो इसोफेगस जो है, फॉर एग्जांपल, इट ट्रांसफर्स द फूड फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द स्टमक एंड एनल कैनाल हेल्प्स इन एग्जिट ऑफ द फूड पार्टिकल्स जो डाइजेस्ट होकर के एब्जॉर्ब होके जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया है, फीसेस इज व्हाट वी कॉल देम, it is then excluded through the anus via the anal canal. So ये दोनों जो ट्यूब्स हैं इनका डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, but they are just transport passages. Okay, the part of alimentary canal from the stomach to the rectum is the proper digestive tract, which is actually responsible for digestion and absorption and all important stuff. अब इससे पहले कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स स्टडी करें वन बाय वन, हम इसोफेगस भी डिस्कस करेंगे, स्टमक। एक चीज जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है, दैट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द जीआईडी। जनरल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि थ्रू आउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जैसी है, और वो एक जैसी इस तरह से है कि इफ वी लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल, इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ट्यूब starting from the mouth. So if this is the mouth of the person, for example, let me draw this. So this is the oral cavity, then there is the pharyngeal area, then esophagus के बाद there is stomach and then small intestine and then large intestine and then the anus. अब ये पूरी ट्यूब है, कहीं इस ट्यूब का साइज कैसा है, कहीं बड़ा है जैसे स्टमक में। अगर हम इसका सेक्शन करें और उसको उठा करके सामने से देखें तो इट विल बी लाइक दिस, देयर इज अ हॉलो ट्यूब, दिस इज द ल्यूमेन और ये इस जीआई ट्रैक्ट की वॉल है। तो इफ नाउ यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज अ सेक्शन थ्रू एनी पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, कहीं से भी हो सकता है ये सेक्शन, और किसी भी पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट को अगर आप सेक्शन करके फ्रंट से देखें तो सेंटर में ये जो नजर आएगा दैट इज द ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब है होल, इसमें से फूड पार्टिकल गुजर रहा है। ठीक है, अब इसकी जो वॉल है, वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सर्टेन लेयर्स। जो सबसे पहले चीज मिलती है वो ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, दैट इज द एपिथेलियम। सो देयर इज अ लाइनिंग एपिथेलियम। अब एपिथेलियम इसोफेगस में अलग तरह की होगी, स्टमक में अलग तरह की होगी, इसमें सेल्स अलग तरह के होंगे, बट देयर विल बी अ लेयर ऑफ सेल। जो पहली लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड दैट लेयर ऑफ सेल्स इज नोन एज एपिथेलियम। इस एपिथेलियम के बिल्कुल बाद, बिल्कुल पीछे या बिल्कुल नीचे देयर इज कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू को नाम देते हैं लैमिना प्रोप्रिया। Lamina propria is a layer of connective tissue, okay? And then there is muscularis mucosa. तो ये जो तीन layers हैं, epithelium, lamina propria and muscularis mucosa, ये तीनों मिलकर कहलाते हैं mucosa. So this is the first layer of the GI tract wall. ये पहली लेयर है जिसका नाम है mucosa, और इस mucosa में फर्दर तीन चीजें हैं। mucosa is composed of the epithelium, the connective tissue and the muscularis mucosa. ठीक है, अब mucosa जो लेयर है उसके बिल्कुल नीचे ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, this area is the second layer of GI tract and this is known as submucosa. सब क्योंकि ये नीचे है म्यूकोजा के, और चूंकि म्यूकोजा के नीचे है इसीलिए सब म्यूकोजा। देन देयर इज अनदर लेयर व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ मसल्स। एक सर्कुलर स्मूथ मसल की लेयर है एंड देन देयर इज एन आउटर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल लेयर, और ये दोनों स्मूथ मसल लेयर्स को मिलाकर नाम देते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना, विच इज द थर्ड लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। सो पहली लेयर क्या है, म्यूकोजा,
दूसरी लेयर सबम्यूकोजा, तीसरी लेयर मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड फाइनली देयर इज सीरोजा। तो ये 4 लेयर्स हैं जो पूरे जीआई ट्रैक्ट में हमें मिलती हैं। अब जैसे जैसे हम डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते जाएंगे, फॉर एग्जांपल इसोफेगस की एपिथेलियम डिफरेंट होगी, बाकी सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। स्टमक की एपिथेलियम डिफरेंट होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियम डिफरेंट होगी। सो जब हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट की बात करेंगे कि स्टमक में डिफरेंसेस हैं इसोफेगस से, सो हिस्टोलॉजिकली स्पीकिंग मेजॉरिटी ऑफ द डिफरेंसेस लाई इन द एपिथेलियम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, बाकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहता है, ठीक है। तो ये कहलाता है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ जीआई ट्रैक्ट, यानी पूरे जीआई ट्रैक्ट में फ्रॉम द esophagus down up till the anus, the innermost layer is the mucosa. Mucosa के पीछे there is submucosa, then there is muscularis externa, and the outermost layer is serosa. Okay, the structure of the alimentary canal from the esophagus to the anal canal shows several features that are common to all these parts. We shall consider these common features before examining the individual parts. The wall of the oral cavity and pharynx, they are different. इसीलिए इसको हमने different chapter में discuss किया है. However, जो tube है उसमें जो innermost layer है that is known as the mucous membrane or also known as mucosa. And the mucosa itself is composed of 3 layers. There is a lining epithelium, then there is a lamina propria, which is the connective tissue, and then there is muscularis mucosa. The mucous membrane rests on loose areolar tissue, which is known as submucosa. Outside the submucosa, there is muscularis externa, and the final outer layer is a serous layer, which is called serosa, adventitial layer. Okay. Now, primarily it is the mucosa in which changes are seen in the alimentary tract, और mucosa में भी particularly epithelium. So epithelium में changes होते हैं different parts of the GI tract में. अब इन तमाम चीज़ों के यानी म्यूकोजा सब म्यूकोजा के कुछ जनरल फीचर्स पढ़ लेते हैं, फिर स्पेसिफिक ऑर्गन स्टार्ट करेंगे. म्यूकोजा में सबसे म्यूकोजा इटसेल्फ इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, और इसका पहला कंपोनेंट है लाइनिंग एपिथेलियम. द लाइनिंग एपिथेलियम इज कॉलमिनर ऑल ओवर द गट एक्सेप्ट इन द इसोफेगस एंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल वेयर इट इज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस. यानी इसोफेगस में और लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल में इट इज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस, अदरवाइज इट इज ऑल ओवर कॉलमिनर. दिस स्ट्राटिफाइड स्क्वामस epithelium has a protective function in these situations. The cells of the more typical columnar epithelium are entirely absorptive or secretive in nature. So esophagus में इसलिए है because food वहाँ से गुजरता है, तो पूरा food bolus जब गुजरता है तो it can actually come in contact with the esophageal wall और friction से कहीं कोई रगड़ वगैरह ना पड़े. इससे बचाने के लिए nature has provided us a more protective layer which is stratified squamous epithelium. बाकी पूरा जो GI tract है जहाँ पे secretion होनी है, absorption होनी है, वहाँ columnar epithelium है. The epithelium of the gut appears as extensive absorptive surface. The factors that contribute to the extent of the surface include considerable length of the alimentary tract. We have a long alimentary tract, इसलिए absorption ठीक ठाक हो जाती है. And also the epithelial lining have different folds like this, okay? And these folds in some parts of the intestine they also make brush border. The presence of the numerous fold is important, and ये जो folds हैं sometimes they go deep down, और जब ये ऐसे deep down जाते हैं so इस तरह का जो gap बन जाता है, this is known as crypt. Okay, we see a lot of crypts in the small intestine. In small intestine, the mucosa bear numerous finger-like projections which are particularly known as villi, and villi actually increases the surface area. So for example, if this is the normal epithelial lining, it sometimes go like this, finger-like projections. These are called villi, और villi के होने से absorption का जो surface area है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. The epithelium of the gut also perform very important secretory function. एक तो absorptive function है, दूसरा secretory function. The secretory cells are arranged in form of numerous glands, such as there are unicellular glands which are secretory, and they are scattered throughout the lining epithelium of the GIT. In many situations, the epithelium dips into the lamina propria, and this is where they are known as the crypts. ये जो इस तरह से dip करते हैं, इस dipping को हम नाम देते हैं crypt formation. In other situations, there are compound tubulo-alveolar glands lying in the submucosa. So the purpose of this paragraph is to tell you that there are a lot of cellular modifications in the epithelium of the GI tract. Finally, there are pancreas and liver that form distinct organs lying outside the gut wall, but they're important glands.
They pour their secretion into the lumen of the gut through the large ducts, such as pancreas से जो आती है secretion, that is via the pancreatic duct, और liver से जो secretions आती हैं, that is via the bile duct. The liver and pancreas and most salivary glands are derivatives of the epithelial lining of the gut. Embryologically, this epithelium is derived from endoderm. So the point is that we are talking about the mucosa. Mucosa is the first layer, and then we talked about lining epithelium. In the lining epithelium, there are different types of cell. Columnar होते हैं ज़्यादातर, but can be stratified squamous. Crypts की बात हमने की, villi की बात की. These are all the modifications of the epithelium. Epithelium के नीचे क्या चीज़ होती है? We are still talking about mucosa, और mucosa का दूसरा component. Lamina propria is made up of collagen and reticular fibers. So basically, this is connective tissue. Also contains a lot of glycosaminoglycans, matrix, some fibroblasts, blood capillaries, lymph vessels. So typical composition of extracellular matrix, connective tissue, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं lamina propria में. Prominent aggregations of lymphoid tissue are present in lamina propria. It also contains lymphoid tissue aggregation, which are known as gut-associated lymphoid tissue. ये हमने जब lymphoid tissue की histology पढ़े थे तब भी ये बात की थी कि पूरे GI tract में ये जो lamina propria है, it contains gut-associated lymphoid tissue. Very important for defense mechanisms. Component number C, यानी तीसरा component of submucosa is the muscularis mucosae. This is a thin layer of smooth muscle that separates the connective tissue of the lamina propria from the submucosa. It consists of inner layer which is arranged circularly and an outer layer which has fibers longitudinally. The muscularis mucosa extends into the mucosal fold but not into the villi. Contractions of muscularis mucosa are important for local mixing of the intestinal contents. So muscularis mucosa is the third layer which is there. It does not extend into the villi. यानी अगर villi है तो muscularis mucosa इसमें नहीं जाता. Villi is only composed of epithelium and lamina propria. Okay, and so this was the first layer, mucosa. Mucosa is composed of three components. The first component is lining epithelium. The second component is lamina propria, and the third component is muscularis mucosae. The second layer of GI tract is the submucosa. It is present below mucosal layer. This layer of loose areolar tissue connects the mucosa to the muscularis externa. Its looseness permits some mobility of the mucosa over the muscle. Numerous blood vessels, that's an important point. Numerous blood vessels, lymphatics, nerve fibers, they are present in the submucosal region. Okay, and then there is the third layer which is called muscularis externa, and it is composed of again two layers. There is an inner layer of circular muscle and there is an outer layer of longitudinal muscles. Both the layers really consist of spirally arranged fasciculi, but inner one is more circular and outer one is more longitudinal. The arrangement of the muscle fibers shows some variation from region to region. Obviously, in the stomach an additional oblique layer is present. In the colon there are tinea coli which are present. ये सब हमने डिस्कस किया है और अभी हम डिस्कस करेंगे भी जब colon की histology पढ़ेंगे. Localized thickening of the circular muscle fibers forms sphincters, और sphincter का काम होता है किसी सुराख को बंद करना. So there is a pyloric sphincter, there is internal anal sphincter. So स्टमक की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल दिस इज स्टमक एंड दिस इज द पाइलोरस, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ स्मूथ मसल की कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से होती है कि दे फॉर्म एन इंटरनल स्फिंक्टर, और ये क्लोज रखता है ताकि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में अननेसेसरली एंटर ना हो. ओके, the serous and the adventitial layer is the outermost layer. Number 4, covering the muscle cord there is a serous layer which is the outermost layer of the alimentary tract. The layer is merely visceral peritoneum. Basically it is visceral peritoneum that covers most part of the GI tract. In some places where a peritoneal covering is absent, the muscle cord is covered by adventitia made up of connective tissue. So that is the outermost final covering of the GI tract. Okay, so which is known as the serosa. Alright, अब ये मुझे important बात समझानी है आपको. Nerve plexus, there are two important nervous plexuses in the gut. One is called myenteric plexus, also known as Auerbach plexus. It lies between the circular and the longitudinal cords of the muscularis externa. So muscularis externa में ये जो circular layer और longitudinal layer है उसके बीच में there is myenteric plexus. Then there is a submucosal plexus. नाम से जाहिर है it will be present in the submucosa. And the third plexus is present near the muscularis mucosa. These are all the nervous connections which are present in the entire gut. पूरी gut की length पे outer
और जो इनर मस्कुलर लेयर्स हैं उनके बीच में भी मायोट्रिक प्लेक्सेस है, और सब म्यूकोजा में देयर इज सब म्यूकोजल प्लेक्सेस. ओके, द नर्व फाइबर्स इन दीज प्लेक्सेस आर बोथ afferent as well as efferent. The efferent fibers supply smooth muscles and glands. Postganglionic neurons meant for these structures lie among the nerve fibers coming from these plexes. So these plexes are important supply mechanism, both efferent as well as afferent. यानी पेन सेंसेशन भी इनसे गुजरेंगी. ठीक है, तो ये जनरलाइज स्ट्रक्चर है. The generalized structure one more time because it is worth discussing one more time. There are 4 layers of the entire GI tract. जो पहली layer है, innermost layer, that is known as mucosa. Next, below the mucosa is taraf, this is the submucosa. Then outer to the submucosa is the muscularis externa, and finally there is a serosal layer, adventitial layer. Okay, ये पूरे GI tract का सिलसिला यही है. अब हम करेंगे ये कि one by one, सबसे पहले esophagus को डिस्कस करेंगे, फिर stomach को डिस्कस करेंगे, and we will talk in the same line. So for example, जब esophagus की heading है तो esophagus में we will talk about the layer number 1, mucosa. Then we will talk about the layer number 2, the submucosa. Then we will talk about the muscularis externa, which is layer number 3. And then hopefully we will talk also about the 4th layer, which is just simply the adventitial layer, layer number 4. Okay? So esophagus is a long muscular tube beginning at the end of the cricoid cartilage, and it opens into the stomach ka cardiac end. It conducts the chewed bolus of food and liquid from the oral cavity to the stomach. Microscopically again ये 4 layers हैं इसमें. There is mucosa, submucosa, muscularis externa and external adventitia. The mucosa का आपको पता है कि there were 3 things in mucosa. There was an epithelial lining, there was lamina propria, and the third thing in the mucosa was muscularis mucosae. The mucous membrane of the esophagus shows several longitudinal folds that disappear when the tube is distended. Okay, ये simple बात है. The mucosa is lined by, ये सुने, there is stratified squamous epithelium, non-keratinized. There is no columnar epithelium. Occasional melanocytes are also present, and endocrine cells are also present. A columnar epithelium similar to that lining the cardiac end of the stomach may extend for some distance into the abdominal part of esophageal region. You know, by and large esophagus is lined with stratified squamous epithelium, but जो lower end है उसका, यानी if this is the esophagus, इसका lower end जो stomach में खुल रहा है, that may have columnar epithelium. और अगर acid reflux होता है, if there is reflux of contents from the stomach up to the esophagus, तो ये यहाँ तक columnar epithelium आ जाती है. इसको हम नाम देते हैं Barrett esophagus. So that's a pathology, and ऐसी esophagus में cancer formation के chances भी ज़्यादा हैं. Now finger-like processes, papilla of the connective tissue of the lamina propria. So there is an epithelium, stratified squamous epithelium. There is lamina propria. At the upper and lower end of the esophagus, some tubulo-alveolar mucous glands are also present. The muscularis mucosa is absent or poorly developed in the upper part of the esophagus. It is distinct in the lower part of the esophagus, and it is thickest near the esophageogastric junction. यानी जैसे जैसे esophagus की ट्यूब नीचे आ रही है, muscularis mucosa की जो लेयर है वो थिक होती चली जा रही है. ओके, सब म्यूकोजा की अगर बात करें, सो दैट वाज म्यूकोजा. सब म्यूकोजा इट्स अ सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. द ओनली स्पेशल फीचर ऑफ द सब म्यूकोजा इज प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड tubulo-alveolar mucous gland, some aggregation of the lymphoid tissue, and the rest is same as in the other parts of the GI tract. The muscularis externa, it contains of 2 layers, longitudinal and circular layers. Nothing new, nothing fancy. Okay, right. And the adventitia is the outermost layer. It is surrounded by dense fibrous tissues, and this is basically is a covering of the peritoneum. Nothing fancy. Some added information, ये देखते हैं क्या है. The circular muscle fiber present at the lower end of the esophagus could possibly act as an sphincter guarding the cardioesophageal junction. However, the circular muscles not thicker here than elsewhere in the esophagus, and the role is as a sphincter, physiological sphincter does appear to exist. अच्छा, ये जो esophagus का lower end है, स्टमक में जहाँ ये एंटर हो रहा है, बाज़ लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर भी है, बाज़ कहते हैं शायद एनाटॉमिकल भी सर्कुलर मसल की थिकनिंग है, बट एनीवेज देयर इज अ स्फिंक्टर मैकेनिज्म है. और ये स्फिंक्टर मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है ताकि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो स्टमक से रीगर्जिटेट करके इसोफेगस में ना जाएं, बिकॉज इफ इट गोज इन देयर तो यहाँ की जो एपिथेलियम है ये स्क्वायरफाइड स्क्वामस से चेंज हो जाती है कोलुमिनर में, एंड दिस इज समथिंग दैट वी डोंट वांट, एंड द डिजीज इज नोन एज GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. सो वी डोंट वांट दैट. ओके, सो
पैरेट इसोफेगस मैंने आपको समझा दिया कि लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में एपिथेलियम इज चेंज्ड फ्रॉम द स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टू द कोलुमिनर एपिथेलियम बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस reflux. Another condition called achalasia, it is a disease of esophagus in which the neuromuscular dysfunction due to which the cardiac sphincter fails to relax. ये जो lower end पे sphincter है ये relax नहीं होता और esophagus का size ज़्यादा बढ़ता जाता है, food यहाँ जमा होना शुरू हो जाता है. This is known as achalasia. Okay, so simple. यहाँ पे esophagus की diagram दिखाई हुई है. The innermost layer, the initial layer will be the epithelium, then lamina propria, then muscularis layer, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं mucosa. Then there is submucosa, then muscular layer, muscula externa, and then the outermost adventitial layer. Okay, let's now talk about stomach, which is a muscular bag that receives food bolus from the esophagus. So stomach में food particles कहाँ से आ रहे हैं? Obviously from the esophagus. The food passes through the esophagus and enters into the stomach where it is converted into a thick paste which is known as chyme. So stomach के अंदर जो thick paste है food particles का, that is called chyme. स्टमक का जो अपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड कार्डियक एंड कार्डियक एंड के साथ लेट मी फाइंड द डायग्राम. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज एसोफेगस ब्रिंगिंग इन फूड, that is called the cardiac end. This is called the pyloric end जो small intestine में जाएगा. And then there is a यूं ऐसे जो बड़ा सा फूला हुआ हिस्सा है that is known as fundus which is usually filled with air या gastric bubble. So ये different parts हैं anatomically. Anatomy of stomach हमने already वैसे discuss की हुई है. Histologically again there will be 4 layers. हमेशा GI tract में ये general formula apply होता है. There is a mucous membrane, the mucosa, submucosa, muscularis externa and serous layer. अब हम mucosa discuss करेंगे. Mucous membrane में क्या स्पेशलिटीज हैं स्टमक की. So the mucous membrane layer number 1, there are 4 layers in the GI tract. As seen with the naked eye, the mucous membrane shows numerous folds which are called ryogi that disappears when the stomach is distended. Okay, epithelium की अगर बात करें, so the stomach की epithelium is columnar epithelium and it secretes a lot of mucus ताकि food के साथ mix हो और food अच्छे से digest हो सके. The apical parts of the lining cells are filled by mucin that is usually removed during the process of tissues so that the cells look empty. Well, this is about histopathology, so this is not relevant at the moment. Mucus secreted by the cells of the lining of the epithelium protect the gastric mucosa against acid. Obviously acid के जो effects हैं वो stomach की wall पर होते अगर यहाँ पे mucosal covering ना होती. So कोई effect नहीं हो रहा है, इसका मतलब mucosa सही काम कर रहा है. Okay. Now, at numerous places at the lining epithelium dips into the lamina propria and that form the gastric pits. These pits extend for a variable distance into thickness of the mucosa. Deep to the gastric pits, the mucous membrane is packed with numerous gastric glands. These glands are of 3 types. There are main gastric glands, there are cardiac gastric glands, and then there are pyloric gastric glands. They depend upon कि कौन सी location है. So if they are present in the body, they are the main glands, cardiac glands, and pyloric glands. Basically बात ये है कि हमने जो अभी diagrams ऊपर discuss की थी, for example this diagram, तो ये जो epithelium है, इसी epithelium में there are some cells which produce mucus. There are some aggregation of group of cells which make different glands and they release important substances. इन glands के बारे में भी हम पढ़ेंगे. But the point to remember is that the glands are present in the lining epithelium, which is part of the mucosa. Mucosa की दूसरी layer क्या थी? Lamina propria. और lamina propria is a simple connective tissue in the stomach, जैसे बाकी जगहों पर है GI tract के, वैसे stomach में भी. And similarly there is a muscularis mucosa. So no fancy story here, is same as the rest of the GI tract. Muscularis externa जो है, it is also similar to the rest of the GI tract, but there is an additional layer of muscle as well. तो इसको जरा पढ़ लेते हैं. The muscularis externa of the stomach is well developed. There are 3 layers. There is an oblique layer, circular और longitudinal तो पूरे GI tract में होता है, बट स्टमक की स्पेशलिटी है also the 3rd layer. Okay, the appearance of the layers in sections, well this is not too much important thing, but ये याद रखना है कि muscularis externa में there are 3 layers of muscles. Okay, अब जब ये बात समझ में आ गई, then we have to talk about specifics of the glands which are present in the stomach region. अब मैंने आपको बताया कि there are 3 categories. One is known as the main glands, cardiac glands and pyloric glands. अब जो cardiac glands हैं, these are confined to a small area near the
cardiac end, and this is near the opening of the esophagus. In this region, the mucosa is relatively thin. Gastric pits are shallow. Pit कहते हैं ये जो इस तरह से अंदर की तरफ जा रही होती है, epithelial invagination. So यहाँ जो खड्डा गड्ढा बन जाता है, this is known as the pit. तो cardiac end पे the pits are very very shallow, यानी बहुत deep नहीं है. The cardiac glands are either simple tubular variety or compound tubulo-alveolar variety. They are mucus secreting glands. An occasional oxyntic or peptic cell may also be present in the cardiac region. So that's simple stuff about the cardiac region. Largely mucus producing glands are there. Then there are main gastric glands. The main gastric glands are present over most of the stomach, but not in the pyloric region, क्योंकि pyloric region की glands अलग हैं. In other words, they are present in the body of the stomach. Okay, these main gastric glands are simple or branched tubular glands. ये details हमने पढ़ी हुई हैं, मेरी glands की video है वो देख लीजिएगा कि what do we mean by simple glands, what do we mean by branched glands, and so on and so forth. The glands open into the gastric pits, each pit receiving the opening of several glands. Here the gastric pits occupy the superficial 1/4. The following varieties of cells are present. अब बात ये है कि ये जो pits हैं यहाँ पे जो cellular lining है epithelium की, they make the glands, और ये glands जो भी चीज़ बनाते हैं, it comes ultimately in the pit and then onto the surface of the internal side of the stomach. अब इन glands में कुछ important cells हैं. For example, there is a category of cell known as the chief cell. The most numerous cells are the chief cells, or the peptic cell, or the zymogen cells. Different नाम हैं chief cells के. They are all the same cells with different names. They are particularly numerous in the basal part of the gland, which means इस तरफ. This is the region where they are, this region basal part of the gland, और ये secretion बनाते हैं और वो pits में आ जाती हैं और ऊपर stomach की तरफ move करती हैं. Their cytoplasm is basophilic. With a special method, the chief cells are seen to contain prominent secretory granules in the apical part of the cytoplasm. The granules contain pepsinogen. That's the important point. So the chief cells contain pepsinogen, which is very important for digestion of proteins. That's the bottom line for chief cells. Okay, then there is another category of cell called the oxyntic cells, also known as the parietal cells. They are large cells, ovoid, polyhedral, and they have large central nucleus. They are present singly amongst the peptic cells. They are more numerous in the upper half of the gland than the lower. They are called oxyntic because they stain strongly with eosin, and that's why oxyntic. They are called parietal cells as they lie against the basement membrane. इनकी लोकेशन की वजह से they are called parietal. इनका भी कुछ बहुत important काम है, and the main job of these particular cell type is to produce obviously some chemical, and that chemical is hydrochloric acid, as well as the intrinsic factor that combines with vitamin B12 to form a complex necessary for normal formation of it. So intrinsic factor is extremely important, जो vitamin B12 की absorption में help करता है, और HCl का भी बड़ा रोल है पूरे स्टमक के मैकेनिक्स के अंदर. ये दोनों important चीजें कौन से सेल से निकल रही हैं? They are being released from the oxyntic cells. So the oxyntic cells release intrinsic factor as well as hydrochloric acid. And then there are some other category of cells too. For example, there are mucous neck cells. Obviously, चूंकि ये mucous neck cells हैं, they produce large amount of mucus in the stomach. There are some endocrine cells, and these endocrine cells produce some important endocrine hormones such as gastrin, such as serotonin, और इनका हम physiology में जिक्र करेंगे कि why they are important. So they are produced from the argentophin cells or the endocrine cells of the stomach. Then there are some stem cells which are undifferentiated. Stem cells का मतलब ये है कि ये किसी भी तरह के cells में differentiate कर सकते हैं. Therefore they are called undifferentiated. They can make one category of cell or the other category of the cell depending upon what is needed. They increase in number when there is gastric epithelium growth, for example, due to damage. कोई अगर damage हो जाता है अल्सर वगैरह की वजह से, so we need more cells, और वो more cells बनते हैं from the stem cells. So the point is कि all these cells produce something important, और ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कौन से सेल टाइप की लोकेशन किधर है और उस सेल टाइप से क्या चीज रिलीज हो रही है. That's an extremely important discussion. Okay, now we also have to talk about the pyloric glands.
In the pyloric region of stomach, the gastric pits are deep and occupy 2/3 of the depth of the mucosa. The pyloric glands that open into these pits are short and occupy deeper 1/3. This is too much detail. They are simple or branch tubular glands and they are coiled. The glands are lined by mucus secreting cell. Important point. Occasional oxyntic or argentifin cells are also present, which may produce serotonin, for example, or gastrin, for example. In addition to other substances, pyloric glands secrete hormone gastrin. Now, what we have done is we have discussed what are the different histological features of stomach. Basic composition वही है. There are 4 layers. In the stomach there is mucosa. In the stomach there is submucosa. Then there is muscularis externa, and then there is serosa. So basic outer covering और inner coverings वैसी ही हैं जैसी बाकी GI tract में हैं, but फिर यहाँ glands की arrangement important है. There are gastric pits और ये pits यहाँ पे glands हैं. They produce substances. इन ग्लैंड्स की, इन एपिथेलियम की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं. कार्डियक रीजन पे अलग तरह के ग्लैंड्स हैं, म्यूकस प्रोड्यूसिंग. मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अलग तरह के हैं, उनमें सेल्स हैं, चीफ सेल्स, देयर आर पैराइटल सेल्स. सो ईच सेल इज प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस. ऑल दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. पाइलोरिक ग्लैंड्स में कौन से सेल्स हैं, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंपॉर्टेंट स्टफ गाइस, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. गैस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक बिकॉज ऑफ एनी रीजन, एंड गैस्ट्रिक अल्सर इज द ब्रीच ऑफ द म्यूकोजल लेयर. अगर स्टमक में किसी भी जगह पे, दिस इज स्टमक एंड देयर इज, यहाँ पे म्यूकस में म्यूकोजा मौजूद है, यहाँ म्यूकोजा प्रॉपर है, एंड हियर वी हैव अ जख्म टाइप ऑफ चीज, यानी ब्रीच ऑफ द म्यूकोजा. दिस इज व्हाट इज नोन एज एन अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर. पैथोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, बट दैट्स द हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग ट्यूब. It's about 5 meters long, and it is divided into 3 anatomically distinct portions. The first one is duodenum, then there is jejunum, and then there is ileum. और सबका चूंकि फंक्शन अलग अलग है, तो थोड़ी बहुत इसकी एनाटमी तो अलग है ही, बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल एंड नोटिसेबल डिफरेंसेस इन द हिस्टोलॉजी. अब आप पूरे जीआई ट्रैक का जो बेसिक जनरलाइज प्रिंसिपल है वो तो समझ गए हैं कि पूरे जीआई ट्रैक में चाहे वो इसोफेगस हो, स्टमक हो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन है, जनरल पैटर्न वही है कि देयर आर 4 लेयर्स. देयर इज म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, एंड देन सीरोजा. और फिर जगह के हिसाब से, जैसे इसोफेगस है तो वहाँ एपिथेलियम डिफरेंट है, स्टमक की एपिथेलियम डिफरेंट है. स्टमक में ग्लैंड्स मौजूद हैं, कुछ अलग तरह के सेल्स मौजूद हैं जो HCl बना रहे हैं, पेप्सिन बना रहे हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर बना रहे हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ दैट लोकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम मौजूद हैं. तो यहाँ भी इसी तरह होगा. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 1 by 1 हम सारे एरियाज के माइक्रोस्कोपिक फीचर्स पढ़ेंगे. द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स. अगेन 4 लेयर्स, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सीरोजा. कोई डिफरेंस नहीं है. इट्स द सेम एज द रेस्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट. द सीरोजल एंड द मस्कुलर layers correspond exactly to the general structure of the alimentary canal. It's exactly the same. The submucosa is also typical except in the duodenum where it contains the glands of Brunner. The mucous membrane exhibits several special features. तो basically यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो 3 layers हैं, the outermost layer which is the serosa, then the muscular layer, circular or longitudinal muscles, and also the submucosa. They are same as the rest of the GI tract. सिर्फ एक different submucosa में है कि there are some specialized glands of Brunner in the duodenum. तो differences बाकी GI tract से small intestine का किस चीज में है? म्यूकोजा में. और वो म्यूकोजा के differences अभी हम देखते हैं क्या हैं. The surface area of the mucous membrane of the small intestine is extensive because यहाँ absorption होनी है, जो food particle digest हुआ है वो absorb होगा. So absorption के लिए the surface area is too much increased. This is achieved by several factors. The considerable length of the intestine is about 5 meter long ताकि अच्छे से absorption हो सके. The presence of numerous circular folds in the mucosa, folds की वजह से surface area बढ़ता है. इसी तरह finger like projections हैं, these finger like projections, they are called villi. विलाई से भी सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन बढ़ता है. एंड देन देयर आर न्यूमरस क्रिप्ट. जैसे सरफेस लाइक प्रोजेक्शंस ऊपर की तरफ हैं, ऐसे जो क्रिप्ट्स हैं वो नीचे की तरफ हैं, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर रही हैं. और इन क्रिप्ट्स का आप कंपैरिजन कर सकते हो जैसे स्टमक में गैस्ट्रिक पिट्स थे. सो इफ यू गो बैक एंड लुक एट द डायग्राम ऑफ स्टमक, वेयर इज इट, दिस डायग्राम, देयर वर गैस्ट्रिक पिट्स. बिल्कुल इसी तरह इंटेस्टाइन में व्हाट इज दिस कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्रिप्ट्स मौजूद हैं और इन क्रिप्ट्स में ग्लैंड्स वगैरह होंगे, डिफरेंट एपिथेलियल सेल्स होंगे, वो भी डिस्कस करेंगे. द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई
on the luminal surface of the cells lining the mucosa. So सिर्फ विलाय नहीं होता बल्कि छोटे छोटे विलाय के ऊपर माइक्रो विलाय भी होते हैं. So overall ठीक ठाक तरीके से सरफेस एरिया बढ़ जाता है पूरे जीआई ट्रैक्ट में, पर्टिकुलरली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का. सर्कुलर फोल्ड्स की अगर बात करें तो द सर्कुलर फोल्ड्स आर आल्सो कॉल्ड द वेल्व्स ऑफ कर्करिंग. ईच फोल्ड इज मेड अप ऑफ ऑल लेयर्स ऑफ म्यूकोजा. 3 लेयर्स होती है ना. देयर इज एन एपिथेलियम, देयर इज लैमिना प्रोपरिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा. द सबम्यूकोसा आल्सो एक्सटेंड्स इनटू द सर्कुलर फोल्ड. द फोल्ड्स आर लार्ज एंड readily seen on the naked eye. They are absent in the first 1 or 2 inches of the duodenum. बाकी पूरी small intestine में these folds are there. विलाय की हमने बात कर ली कि they are typically finger-like projections consisting of core of the reticular tissue covered with the surface epithelium. So if you look at the villi here, this is the villi, this is the epithelial layer, then there is lamina propria and then muscularis mucosa and then submucosa. So all these layers, जो muscular layer है वो इसमें dip in नहीं करती, but submucosa और mucosa are component of the villi. Okay, each villus contains central lymphatic. यहाँ पे lymphatic channels हैं, blood vessels हैं, तो जो भी चीजें absorb होंगी वो directly उस blood में, उस lymphatics में enter हो जाएंगी and they will then go to different parts of the body. Now the क्रिप्ट्स या इनका पूरा नाम है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन. दे आर ट्यूबुलर इनवेजिनेशन. देखें विलाय आर द इवेजिनेशन, ऐसे बाहर निकले हैं, जबकि क्रिप्ट्स आर द इनवेजिनेशन. सो अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस है, सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बाहर की तरफ है दैट इज द विलाय. जो अंदर की तरफ इनवेजिनेशन है दैट इज कॉल्ड द क्रिप्ट. ओके, दे आर रियली सिंपल ट्यूबुलर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स. यहाँ जो एपिथेलियल अरेंजमेंट है वो ग्लैंड बनाता है एंड दे प्रोड्यूस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस टू बी सिक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब अगर एपिथेलियल लाइनिंग की बात करूं स्मॉल इंटेस्टाइन की, सो द एपिथेलियम कवरिंग द विलाय and the areas of the mucosal surface intervening the villi consist predominantly of the columnar cells. So they are columnar cells. ये बात हमने पहले भी की थी कि ज़्यादातर GI tract में there are columnar cells. सिर्फ esophagus की मैंने आपको बताया था कि there is stratified squamous epithelium. Okay? Now these are called enterocytes. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो कॉलुमिनर सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एंटेरोसाइट्स. स्कैटर्ड अमंग द कॉलुमिनर सेल्स देयर आर गॉबलेट सेल्स विच प्रोड्यूस म्यूकस, ताकि सामान सारा जो इंटेस्टाइन से गुजर रहा है उसमें फ्रिक्शन ना हो और वो अच्छे से स्मूथ तरीके से फ्रिक्शन लेस तरीके से गुजर जाए. द सेल्स लाइनिंग द क्रिप्ट आर प्रीडोमिनेटली अनडिफरेंशिएटेड, स्टेम सेल की तरह हैं. दीज सेल्स मल्टीप्लाई टू गिव राइज टू एब्जॉर्प्टिव कॉलुमिनर सेल्स एंड टू द गॉबलेट सेल्स. सो दे आर, ये जो क्रिप्ट्स के अंदर सेल हैं, यहाँ क्रिप्ट में these are the stem cell और ये epithelial cells बनाते रहते हैं जो surface पे जाते रहते हैं. So their job is regeneration. Near the base of the crypt there are a specialized type of cells called the Paneth cells. They secrete enzymes which help in the process of digestion. Okay, so यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं these are the villi and these are the crypts जो invaginations हैं. Easy stuff, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है. और ये डिफरेंट एपिथेलियल, ये पूरा क्रिप्ट है ना, ये इन्वेजिनेशन है, तो इसमें जो इंटेस्टिनल सेल्स हैं बीच बीच में व्हाट यू सी आर द गॉबलेट सेल विच प्रोड्यूस म्यूकस विच कम्स आउट इन द ल्यूमेन एंड देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर द पेनेथ सेल्स. और ये जो Paneth cells हैं, they are also interspersed within the crypt and they produce different enzymes for digestion. So epithelium के अंदर different flavors of cells मौजूद होते हैं which perform different functions. Now, cells of the small intestine, absorptive columnar cell. Now, there are different types of cells. अभी तक हमने कुछ cells का नाम लिया है. We talked about कि there are columnar cells which are also called enterocyte. We talked about Paneth cell. We talked about undifferentiated cell. तो यहाँ इनके बारे में जरा दोबारा देखते हैं. There are columnar cells and the job of the columnar cell is absorption. Therefore, they are also called absorptive columnar cells. The general characteristic of the columnar epithelium apply to the columnar cell lining the mucous membrane of the small intestine. Each cell has an oval nucleus and blah and blah. और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखें, so they have a striated border because of the presence of microvilli, which helps in the process of absorption. Okay, each microvillus has a wall of plasma. This is too much, but the important point is कि जो microvilli हैं, उनकी surface पर there is a layer of glycocalyx. Okay, so that's a glycocalyx layer on the surface. So all the microvilli are covered with this glycocalyx. Now the plasma membrane on the lateral side of the absorptive cells show folds that interdigitate with those of the adjoining cells. Adjacent cells are united by typical junctions, complexes, by scattered desmosomes.
इंटरसेलुलर कैनाल्स में भी प्रेजेंट बिटवीन द सेल. सो एक सेल है उसके साथ दूसरा सेल है, बीच में कैनाल्स हो सकती हैं, एंड बिकॉज ऑफ द कैनाल्स देयर कैन बी ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल. द साइटोप्लाज्म ऑफ द एब्जॉर्प्टिव सेल कंटेन यूजुअल ऑर्गेनेल्स. दे कंटेन, for example, mitochondria, lysosome, smooth endoplasmic reticulum, Golgi bodies, and these cells are responsible for absorption of amino acids, carbohydrate, lipids. जो भी food digest हुआ, that will be absorbed by the columnar cell. So intestine में, small intestine में एक cell category जो कि बहुत important है absorption के लिए, वो है columnar cells. ठीक है? दूसरी category of cell कहलाती है goblet cell, and the job of the goblet cell is to produce mucus. These are the cells which produce mucus. They are the mucus cells, that's it. और ये पूरी epithelial lining में बीच बीच में मौजूद होते हैं, and अगर ये ना हो then there will be ulcer formation and a lot of different problems. Okay, so goblet cell is equal to mucus production. Then we have undifferentiated cells which are stem cell like creatures, and their job is to replace the cell. So whenever there is any cell type which is lost, the job of intermediate cell is to replace the cell to become fully differentiated. Then we talked about Paneth cell, also called the zymogen cell. They produce different enzymes and they are present in the crypts जो invaginations थी उनमें होते हैं. They contain prominent eosinophilic secretory granule because they do secretions of enzyme. With electron microscopy, Paneth cells are seen to contain considerable rough endoplasmic reticulum because they secrete enzymes which are proteins. Rough endoplasmic reticulum का ज़्यादा होना तो बनता है. The function of the zymogen cell is not well known, but they are supposed to produce enzymes such as lysozyme, which help in the process of digestion of bacteria. So food digestion या bacterial digestion, which is actually to destroy the bacteria. Okay, they may also produce other enzymes which are not very clear at the moment, but they may help the process of digestion. Okay, then there is another category of cell called the endocrine cells, and these endocrine cells produce some hormones. These are the cells which are also known as enterochromaffin cell. Endocrine cells are also called enterochromaffin. This is a memory thing, ये आपको याद रखना है, ठीक है? They contain a lot of granular structure which is stained with the silver salts. These cells are therefore called the enterochromaffin cells. Okay, with the introduction of the immunohistochemical techniques, it has now been demonstrated that these cells are of various functional types and contain amines which have endocrine function, produce some hormones. Other cells in the lamina propria और कौन-कौन से cells होते हैं? Apart from the connective tissue associated fibroblasts, there are lymphocytes in the lamina propria. There are also plasma cells in the lamina, so there are some immune cells in the lamina propria. Okay, now lymphoid tissue in the small intestine. अब पूरी small intestine की जो lamina propria है उसमें there are aggregates of lymphoid follicles, lymphoid cells. These are called Peyer's patches. थिंक अबाउट इट, आपकी पूरी इंटेस्टाइन है, इसमें से फूड पार्टिकल गुजर रहा है, तो फूड पार्टिकल में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिससे बॉडी को बचना है. तो यहाँ लेमिना प्रोप्रिया में एपिथेलियल लाइनिंग के बिल्कुल नीचे देयर आर एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू एंड दीज एग्रीगेट्स आर कॉल्ड पेयर पैचेस. पेयर पैचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फॉर इम्यून सर्वेलेंस. ओके, उसके बारे में भी हम पढ़ते भी थोड़ी देर में. नाउ द एपिथेलियम ओवरलाइंग द लिम्फेटिक फॉलिकल कंटेन्स फॉलिकल एसोसिएटेड एपिथेलियल cells which are also called M cells. These cells are columnar. They are believed to take up the antigens and present it to the underlying lymphoid tissue. So for example, if this is the lymphoid tissue, इसके बिल्कुल ऊपर मौजूद होंगे M cells. M cell का काम है एंटीजन को के साथ इंटरेक्ट करना और उसे जाके पहुंचा देना, प्रोसेस करके पहुंचा देना लिम्फॉइड सेल तक. सो एम सेल्स आर बेसिकली काइंड ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो एंटीजन को पिकअप करते हैं और पहुंचा देते हैं लिम्फॉइड फॉलिकल्स तक, यानी पेयर्स पैचेस तक. Pair patches are a small collection of lymphoid tissue similar in nature to the follicles of the lymph node. They are solitary lymphatic follicles, okay, and they are also present sometimes in the form of aggregation. So अगर aggregated हैं then they are called pair patches, otherwise solitary lymphatic follicles इनका नाम है. इनकी dimensions वगैरह दी हैं कितने सेंटीमीटर, this is not important. It has been held that gut associated lymphoid tissue may possibly have a role to play in the processing of B lymphocytes, but at present this is not very much known, so we don't comment on this. But the point is, what is the job of these pairs patches? They
they are important for recognition of microbial organisms so that they can be identified and they can be dealt with, ताकि उनको destroy कर सकें. ओके, सो नेचर ने आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये पुलिसिंग मैकेनिज्म रखा है, और ये पुलिसिंग मैकेनिज्म है Peyer's patches present in the lamina propria. Right now, we also should be able to tell how can we distinguish between duodenum, jejunum and ileum, which are three different parts of small intestine. So duodenum की अगर बात करें, duodenum is easily distinguished from the jejunum or ileum because of the presence of glands in the submucosa. No glands are present in the submucosa of jejunum or ileum. ये जो duodenal glands हैं, these are called Brunner's gland. Yeah, if I remember it correctly, Brunner's gland. Duodenal glands, which are called Brunner's gland, they are present only in the duodenum, not in jejunum and ileum. तो ये बात याद रखनी है अगर आपसे कोई पूछता है. So you should be able to tell कि the Brunner's gland are present only in the jejunum. Jejunum की अगर हम बात करें तो proximal part of the jejunum shows significant differences in structure from the terminal part of the ileum. The changes take place gradually in proceeding caudally जैसे से जाते हैं. The small intestine, there being no hard and fast line of distinction between jejunum and ileum. That's an important point. अक्सर लोग कहते हैं कि क्या boundary wall क्या है, तो नहीं पता चलता. As compared to the ileum, jejunum has the following features. Jejunum has large diameter, thicker wall, numerous circular folds, larger villi, fewer solitary lymphatic follicles and great vascularity. So these are the features which help you identify jejunum. और अगर ileum की बात करें, the villi are thin, cylinder in the region. The submucosa contains Peyer's patches and there are M cells. M cells present antigen to the Peyer's patches. Okay, these are the differentiating features, although the line is not very clear between jejunum and ileum. अच्छा जी, अब कुछ पैथोलॉजिकल स्टफ. Crohn disease और regional enteritis, it's an idiopathic chronic ulcerative inflammatory bowel disease. हम IBDs जब पढ़ेंगे, not the irritable bowel syndrome but the inflammatory bowel disease, तब ये बात करेंगे कि what is Crohn's disease and ulcerative colitis. Celiac sprue is the most common cause of primary malabsorptive disease. The condition is characterized by significant loss of villi. So if we lose a lot of villi, we cannot absorb substances, and then the disease is called celiac sprue, which is a malabsorptive state. Or childhood में it is common. There are two forms actually. The childhood form seen in the infants and children and is commonly referred to as also the celiac disease, जिसमें जो villi हैं उनके against antibodies particular proteins के against बनती है और ये villi destroy हो जाते हैं. That is called the celiac disease. और इसकी एक adult form होती है जिसमें which is actually idiopathic, उसकी cause पता भी नहीं है क्या है, but perhaps autoimmune ही है, उसमें भी autoimmune antibodies बनती हैं and they destroy the villi. So these are the important histological features about the small intestine. Now these plates are not too important for you because that's the job of a histopathologist to identify these. What I would like to tell you is to remember the basic concepts that I've told you, okay? But even if you look at any of the diagram, since we have discussed these, you should be able to comprehend this. So for example, what we are looking at here is a feature through the duodenum. Duodenum का section हम देख रहे हैं, and then we should be able to identify different parts. So for example, if I ask you what is this, so this may be a villi and these are the epithelial lining, okay? Then what we are looking at, what would be after epithelial lining, this would be lamina propria. So number 2 is lamina propria. Then we should have a muscularis mucosa layer which is there. Then we should have number 4 submucosa. Then there should be muscularis externa layer which is there, muscularis externa. And then we should also have Peyer's patches in the lamina propria and submucosa. So these are the Peyer's patches, okay? So that's basically it. You should be able to comprehend the diagram because we have discussed everything in the text. अब मुझे बात करनी है कि जो last part है GI tract का, which is the large intestine, वहाँ important histological features क्या है? Large intestine consists of different components. For example, एक इसमें area होता है cecum, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का मर्जर. सो फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ खत्म हो रही है तो यहाँ अपेंडिक्स निकलता है और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है सीकम एंड देन द असेंडिंग कॉलॉन. सो देयर इज अ सीकम एरिया, देन देयर इज एन अपेंडिक्स, देयर इज कॉलॉन, रेक्टम, एनल कैनाल. दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. और
इस लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कन्वर्जन ऑफ लिक्विड अनडाइजेस्टेड मटेरियल इनटू द सॉलिड फीसेस. सो इट बेसिकली प्रोसेस whatever is coming from higher up, यानी इंटेस्टाइन से जो यहाँ आ रहा है उसकी प्रोसेसिंग करके फीसिस में कन्वर्ट करना. अब it harbors some non-pathogenic bacteria which produce vitamin B12 as well as vitamin K. So these bacteria are actually called the normal flora of your body. आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन में होते ही हैं. The former is necessary for hematopoiesis, which is B12, and the later for coagulation because it is important for generation of a lot of clotting factors. अब जो different parts हैं लार्ज इंटेस्टाइन के उनको पिक करते हैं वन बाय वन और उनके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं उनको स्टडी करते हैं. सो कोलॉन फॉर एग्जांपल, कोलॉन के 3 पार्ट्स हैं. देयर इज एन असेंडिंग कोलॉन व्हिच गोज इन दिस डायरेक्शन, देन देयर इज अ डिसेंडिंग कोलॉन व्हिच गोज डाउनवर्ड इनटू द सिग्मोइड कोलॉन एंड इन मिडल इज द ट्रांसवर्स कोलॉन. अब कोलॉन का जो स्ट्रक्चर है इट कन्फर्म्स टू द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द गट. जनरल डिस्क्रिप्शन बोले तो देयर इज फर्स्ट लेयर द म्यूकोजा, देन देयर इज सब म्यूकोजा, देन देयर इज muscularis externa and finally there is serosa. तो colon में भी ऐसा ही है. There is a mucous membrane and the mucous membrane of the colon shows numerous crescent shaped folds. There are no villi. ये बात भाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब यहाँ पे फूड पार्टिकल्स जो डाइजेस्ट हुए हैं ग्लूकोज अमीनो एसिड उन्हें एब्जॉर्ब तो करना नहीं है. So there are no villi. The mucosa shows numerous closely arranged tubular glands or crypts similar to as seen in the small intestine. The mucosal surface and the glands are lined by epithelium made up predominantly of the columnar cells. So यहाँ पर भी columnar cells हैं और the main function of the columnar cell is to absorb excessive water. Many columnar cells secrete mucus और यहाँ पे mucus secreting cells होंगे as well as the antibodies, particularly IgA. The antibodies provide protection against the pathogenic organism. Numerous goblet cells are present because mucus has to be produced. ठीक हो गई बात. The epithelium overlying the lymphatic follicles मौजूद हैं और उसके ऊपर जो epithelium है it also contains the M cell. So यहाँ पे lymphoid follicle है उसके ऊपर ये M cell मौजूद है. ये एंटीजन को पकड़ के प्रोसेस करके इन lymphoid follicles को देगा. यही हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पढ़ा था. ठीक है. नाउ सब म्यूकोजा की कोई खास बात, द सब म्यूकोजा ऑफन कंटेन्स फैट सेल्स. सम सेल्स कंटेन periodic acid shift positive granules which are called mucophages and they are more numerous even in the rectum. So colon में भी ये mucophages हैं जो फैट सेल्स हैं और they are also present in the rectum. Now muscularis externa, there is longitudinal layer and the longitudinal layer is arranged in 3 bands which are called tena coli. ये जब हमने gross anatomy पढ़ी है तब मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया है BD 84 से कि how these tena coli, these are the tena coli, the bands of longitudinal muscle. और इस tena coli की tightening की वजह से there are saculations and hausturations, यानी ऐसा structure बन जाता है large intestine का. That's because these are called saculations and this is because of tena coli. Serosa is the outermost layer और ये जो outermost layer है इसमें outpouching of peritoneum है which is filled with fat and it has a special name called appendices epiploidy. These are the fatty outpouching which are called appendices epiploidy. Okay, these are the serosal layer. So basically largely जो colon है it is conferring to the general description of the GI tract. और एक जो particular बात आपने याद रखनी है वो ये कि इसका मेजर फंक्शन है reabsorption of water. It contains columnar cells. Okay, now the vermiform appendix, it is a vestigial organ. It is the narrowest part of the gut and the structure of the appendix resembles that of the colon with the following differences. The crypts are poorly formed in the appendix. The longitudinal muscle coat is complete and equally thick all around. So therefore tena coli are not present. Colon में tena coli हैं और appendix में नहीं है. The submucosa of appendix contain abundant lymphoid tissue which may completely fill the submucosa. The lymphoid tissue is not present at the birth, but it gradually increases and reaches to its high levels at about 10 years of age. Subsequently, there is progressive reduction in the quantity of the lymphoid tissue. So birth में there is no lymphoid tissue, then it increases, then it decreases. Okay. Rectum. The structure of the rectum is similar to that of the colon except for the following. A continuous coat of longitudinal muscle, so no tena are present. Peritoneum covers the front and sides of the upper 1/3 of the rectum and only the front of the middle third of the rectum. The rest of the rectum is devoid of serous covering. So that's an important point. Colon is covered with the
serous covering, but here these are the locations जहाँ पे peritoneal covering है और जहाँ पे नहीं है. There are no appendices epiphyseal in the adventitia, in the external layer. जो serosal layer है उसमें appendices epiploidy नहीं है. Some important features about the anal canal: it's about 4 cm long. The upper 3 cm are lined by the mucous membrane, and the lower 1 cm is actually lined by the skin. Mucosa of the anal canal upper 15 mm में is lined with the columnar epithelium like the rest of the GI tract. The mucous membrane of this part shows 6 to 12 longitudinal folds which are called anal columns. The lower end of the anal columns are united to each other by short transverse fold called the anal valves. So there are anal columns, there are anal valves, and the anal valves together form the transverse line which is called pectinate line. All these features we have actually seen in much more detail in the gross anatomy. So if you look at the diagram, for example, here this is the anorectal junction. So above here will be the rectum, and this is now the anal canal. These are the anal columns, and anal columns इस तरह ये जो anal valves बना रहे हैं, these valves they make the pectinate line. So there's a pectinate line in there, and then there is also a white line. ये तमाम important features हैं और ये embryologically different हैं एक दूसरे से. Actually we have discussed these in gross anatomy in much detail. So refer करें मेरी anal canal की वीडियो को, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. The mucous membrane of the next 15 mm of the rectum is lined by non-keratinized stratified squamous epithelium. So ये epithelium important है कि initial 15 mm की क्या epithelium है, next 15 mm की क्या epithelium है. So first area जो है that is columnar epithelium, then there is the stratified squamous epithelium. Okay, these are all important discrimination between different parts of the anal canal. Now this region does not have anal columns. The mucosa has a bluish appearance, और यहाँ इन्होंने color करके भी बता दिया the bluish appearance. And what else? Because of the presence of a dense venous plexus, ये blue color की वजह ये है, between it and the muscular cord. This region is also called the pectin or the transitional zone. The lower limit of the pectin forms the white line. So ये वाला जो region है जिसमें increased venous plexus है उसका lower region कहलाता है white line. जो शुरू का 15 मिलीमीटर था उसका लोअर लीजन कहलाता है पेक्टिनेट लाइन. सो ये लाइंस वगैरह आपको याद होनी चाहिए, ठीक है. व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन. अब जो आखिरी पार्ट है एनल कैनाल का, विच इज 8 to 10 मिलीमीटर ऑफ द एनल कैनाल, आर लाइंड बाय ट्रू स्किन, आल्सो कंटेन्स द हेयर फॉलिकल्स. Above each anal valve there is a depression called the anal sinus. Apical sweat glands are also present there, and these circumanal glands produce sweat obviously. So this is actually lined with the skin. Therefore ये सारे features skin से मिलते हैं. So the last part, this last part is covered with skin. Okay. अच्छा, submucosa of the anal canal. Prominent venous plexes are present in the submucosa. The internal, अच्छा यहाँ hemorrhoids important है because जो blood supply यहाँ पर है, they form the hemorrhoidal pathology. The internal hemorrhoid plexes lie above the level of the pectinate line. You remember this is the pectinate line, so these are the internal hemorrhoid levels. And while the external hemorrhoid plexes lie near the lower end of the anal canal, external hemorrhoids. Okay, external hemorrhoids. Now muscularis externa of the anal canal again contains longitudinal circular muscles, and the muscles are thickened to form the internal anal sphincter. And outside the layer of smooth muscle there is an external anal sphincter that is made up of the striated muscle. और ये डिटेल सारी हमने डिस्कस की हुई है ग्रॉस एनाटॉमी में. Ulcerative colitis, acute appendicitis, this is actually very common inflammation of appendix. Ulcerative colitis is one of the spectrum of the inflammatory bowel disease. और दूसरा इसका जो counterpart है that is called Crohn disease. ये हम पढ़ेंगे जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे intestine की. That is basically all about it. Hemorrhoids also we will discuss in surgery lectures. जब surgery के lectures discuss करेंगे तब ये बात आएगी. Now that is a table for those students जो table से याद करते हैं. So there are different cell types, their secretory products and their location. So D1 type cells which produce vasoactive intestinal polypeptide VIP are for example present in the stomach, small intestine, large intestine and pancreas. D type cells which produce somatostatin are not present in large intestine, बाकी जगहों पर हैं. Now
enterochromaffin cell type 1, which produce these substances, are present only in the small intestine and large intestine. So you can read this table and memorize this table. So this is basically all about the histology of the digestive tract, esophagus to anal canal. That's pretty simple. आपको 4 layers याद रखनी है. Layer number 1 is mucosa, layer number 2 is submucosa, layer number 3 is muscularis externa, and layer number 4 is serosa. और जो mucosa है, that is again divided into 3 different components. One is epithelium, the other one is lamina propria, and the last one is muscularis mucosa. With this, I stop this video here. आपसे मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में बहुत जल्द. अपना ख्याल रखिएगा.